Good afternoon, everyone. Yeah, any doubts from last class? Good afternoon, everyone. Before starting the session, today's session, so any doubts from the last class? Please let me know. Everyone able to hear me? Hear my voice? Okay. So any doubts from the last class? Please let me know. Yeah, good afternoon, everyone. Okay, fine. So I think two participants have hand raised, given hand raise. So who are they? Abhishek. Abhishek Mehta Yes, sir. and Priyanka Kumar. Yeah, tell me, any doubt? No doubt, sir. No doubt. Okay, okay. So Priyanka Kumari? Hello. Hello? Hello? Hello. Hello. Hello? Yes, sir, Priyanka Kumari. हाँ बोलिए प्रियंका कुमारी, कुछ डाउट है क्या? Okay, so let us start the session. So now, today what we will do is,
now in the last class we have seen the 7 segment display. Na? We have seen the LEDs and display, right? LEDs and display. Yeah, Priyanka, please type your doubt in chat window. Class we have seen in the last class we have seen that how to interface the 7 segment display with the microcontroller, right? And before that we have discussed about LED interfacing. Okay, LED interfacing. Yes, Priyanka, tell me. Hello. Hello. Yes, Priyanka. प्रियंका, आपका साइड पूरा डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा आपका डाउट क्या है वो चार्ट विंडो में पोस्ट करो. Okay, fine. Because we have seen LED. We have seen LED. Hello. We have seen LED interfacing and we have seen the 7 segment display interfacing, right? So in the two scenarios, both LED is output device and so your display is also output device. So now what I want to do is today I want to interface one input device. Okay, so how to interface input device, right? So now for interfacing, what are all different input devices are there? Of course. So first let us take the basic thing. Basic, we will interface the switch and LED. One port. Yeah, Suman is asking some doubt. Sir, yesterday we connect 7 segment display with one port. Number 2, is this possible? We can connect 1 segment with 2 ports at same time. That means, Suman, you want to connect 2 displays to 2 different ports or to the same port? Okay, Suman, I'll answer your question at the end of the session. First, let us start the session because everyone is waiting, right? So now here, okay. Now here today we will take one switch and LED. Okay, today we'll take one switch and LED, right? So first, what I want to have 89051 microcontroller. Just take 89051 microcontroller, and you take one LED, right? LED is optoelectronic device. You can select, you can take any color. So now here, last time we have used red color, na? So now let us take the green color today. Okay, green, right? So now, and one more is switch. Push button switch will take. So you have to type button here. Push button switch na. So you have to type button switch. So here you can see button active SPST push button switch. This is the symbol. Okay, this switch will take. Just add here. Okay, fine. And remember here, of course, one more 330 ohm resistor also you please take. 330 ohm resistor, right? Okay. Now what I will do is I'll take the microcontroller, select the microcontroller, double click here, you will get the microcontroller. And if you want to zoom out, you just click on plus symbol, so it will become zoom out. So then what I will do is I'll connect 8 LEDs, okay, or so I'll connect, I'll rotate, right? So now all the LEDs have rotated, right? What I'm going to do is I'm going to connect all these LEDs to one port.
I'll connect it to port. I'll connect it to port 2. Okay, port 2. Already we have seen glowing of LEDs, right? Already we have seen how we can glow the LEDs and how we can generate different patterns on LEDs. But this time, whenever I press the switch, then only that time only the LEDs needs to be turned on. Okay, all the LEDs should be on. Whenever I don't press the switch, all the LEDs should be in off state. Okay. Now what I'll do is I'll connect all these LEDs to port 2. Okay, I'll connect it to port 2. I'll connect it to port 2. 8 LEDs I'm connecting into 8 pins of the port 2. Okay, and finally this is the last LED. Of course, all the LEDs, what we have to do, we have to connect it to ground. So but before connecting ground, you connect one resistor also, that will limit the, if any high currents are coming from the microcontroller, so that won't damage the LED if you connect the resistor. So अभी इधर क्या कर रहे हैं हम, अभी 8 LEDs ले रहा है, 8 LEDs लेके पोर्ट 2 को कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, ऑलरेडी हम एग्जांपल देकर फर्स्ट एक्सरसाइज में LEDs कनेक्ट करके हम थोड़ा डिफरेंट पैटर्न जनरेट किया. बट अभी मैं क्या कर रहे हैं, LEDs 8 LEDs है ना इधर, वो मेरा स्विच कनेक्ट करता तभी ऑन करना चाहिए. ओके, सो वही मेरा एप्लीकेशन है अभी. सो अभी 8 LEDs पोर्ट 2 को कनेक्ट किया. LEDs का क्या तोड़, रेसिस्टर को कनेक्ट करके ग्राउंड को कनेक्ट करना, क्योंकि रेसिस्टर क्यों कनेक्ट कर रहा है इधर, माइक्रो कंट्रोलर से कुछ ज्यादा करंट आए तो LED डैमेज हो जाएगा. सो डैमेज अवॉइड करने के लिए हम रेसिस्टर कनेक्ट करना, राइट. तो अभी ग्राउंड ले लो, इधर टर्मिनल मोड में आपको ग्राउंड पावर मिलेगा. अभी ग्राउंड ले रहा है मैं. ओके, ग्राउंड ले रहा है, तभी शॉर्ट करके ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे. यस, अभी LEDs कनेक्ट किया हम. अभी एक स्विच, हमारा स्विच कनेक्ट करेंगे, बटन स्विच. तो किधर कनेक्ट करेंगे, मेरा स्विच P1.0 को कनेक्ट कर रहा है, राइट. दूसरा एंड, स्विच का दूसरा एंड है ना, वो ग्राउंड को कनेक्ट करना. तो नाउ आई एम टेकिंग स्विच नाउ. I'm connecting switch to P1.0 and other end of the switch I'm connecting it to ground. That means when you press the switch, what happens, this ground will be connected to P1.0. How we can detect, when the switch is pressed, P1.0 value becomes 0, right. हम switch प्रेस करें तो क्या होता, दोनों टर्मिनल शॉर्ट होता ना, ग्राउंड P1.0 को कनेक्ट करता, राइट, कनेक्ट होता, राइट. सो उसमें अभी P1.0 में ग्राउंड है बोले तो लॉजिक 0 है, बोले तो क्या है मीनिंग, उसका स्विच इज प्रेस्ड नहीं है तो, राइट. तो देखो इधर आपको चाहिए तो एक सिमुलेशन, देखो इधर रेड सिंबल बोले तो लॉजिक 1, ओके. ब्लू सिंबल बोले तो लॉजिक 0, ब्लू सिंबल बोले तो लॉजिक 0. अभी देखो इधर ग्राउंड है ना, अभी प्रेस करे तो इधर ब्लू आ रहा है ना, इधर ब्लू आ रहा है ना, राइट. दैट मीनिंग क्या है, अभी स्विच प्रेस करे तो P1.0 में लॉजिक 0 आएगा. अब रिलीज करे तो P1.0 में 1 आएगा. ओके, अभी ये सभी LEDs ऑन हो गया. अभी इधर हम प्रेस नहीं किया, फिर भी इधर सभी LEDs ऑन हो गया, क्योंकि हम प्रोग्राम नहीं लिखा ना इसमें. तो प्रोग्राम लिख के इसमें डाले तो ऑटोमेटिक हमारा एप्लीकेशन क्या है, ऐसा ऑपरेट होता. ओके, so now this is the circuit, hardware circuit. Okay, now I want to make it as, right, now I want to make it as, I want to write the program, right. So now 1 minute ओपन करता.
एक में मैं प्रोग्राम का विंडो ओपन करेंगे, लोड कर रहे हैं अभी। सो नाउ प्रोग्राम किधर लिखना, हम प्रोग्राम दूसरा सॉफ्टवेयर में लिखना, क्या कौन सा सॉफ्टवेयर, कील में। ओके, अभी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम स्विच एलईडी दे रहे हैं मैं। ओके, स्विच एलईडी। तो मेरा कौन सा माइक्रो कंट्रोलर के लिए कर रहा है, 89C51 नो करो। राइट, अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, अभी प्रोग्राम लिखना। राइट, सो प्रोग्राम लिखने के लिए न्यू सेलेक्ट करके now you can write the program here. Now you can write program here. Now I'll write the program first. I'll explain the program afterwards. Right? Okay. आपको each line by line program बाद में explain करेंगे, but first let me write the program. Let me finish the program. Okay. So let us finish the application. Okay. So we are using port 2, right? First. All the LEDs are connected at port 2. सभी LEDs port 2 में connect हो गए ना? Right. So here switch is connected P1.0, right? So P1.0. Now I'll test the P1.0. Jump, no beat. Okay. Jump a bit is which one, P1.0, and next I'll write. Okay, right, next. So the otherwise what I'll do is move a comma 0 FFH, then move P2 comma a. Okay, JMP skip. Okay, so here I'll put next. I'll put next here. Then JMP repeat. तो repeat किधर डालना, move a comma 00H, move P2 comma a. Okay, so I'll explain the program, no problem, don't worry. P2 L1 JM to L1. Right, so now program लिखा, सेव कर रहे हैं, switch LED. Okay, sorry, अभी ये प्रोग्राम switch LED A सिम डालना, switch LED PROG dot ASA. Okay, now हम क्या करना, अभी सोर्स ग्रुप पे क्लिक करके वो प्रोग्राम इधर ऐड करना, राइट क्लिक करके सोर्स ग्रुप पे राइट क्लिक करके वो प्रोग्राम ऐड करना। सेम प्रोसीजर है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चाहिए तो आपको अभी मेरा माइक्रो कंट्रोलर पार्ट नंबर 11, कुछ लोग आज नया है तो पार्ट नंबर 11 वीडियो फेसबुक में अवेलेबल है, निमी चैनल में, तो आप वो रेफर कर सकता, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्लियरली उधर एक्सप्लेन किया मैं। ओके, राइट, तो नाउ अभी ऐड किया, सो प्रोग्राम ऐड किया। कंपाइल करने के पहले हम क्या करना, तो फ्लैश में जाके कॉन्फ़िगर फ्लैश टूल्स, गो टू आउटपुट एंड एनेबल एक्स फाइल। ये ऑप्शन क्यों एनेबल करना,
क्योंकि हमको मशीन कोडेड फाइल चाहिए। अभी हम प्रोग्राम लिखना इधर हम प्रोग्राम लिखना, ये प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर को नहीं चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर को मशीन कोडेड प्रोग्राम चाहिए। वो मशीन कोडेड प्रोग्राम जनरेट करने के लिए एक स्टेप करना क्या है, फ्लैश में जाके कॉन्फ़िगर फ्लैश टूल में जाए तो ये बॉक्स आएगा, तो उसमें आउटपुट में क्रिएट एक्स फाइल ऑप्शन था, वो इनेबल करना, राइट। तो अभी कंपाइल करना, कंपाइल करने के लिए प्रोजेक्ट बिल्ड टारगेट, राइट। तो नाउ जीरो एरर्स, तो जीरो एरर्स ऑलरेडी हम मशीन कोडेड फाइल क्रिएट हो गया हमारा। तो अभी फिर हमारा सर्किट को जाएंगे, फिर हमारे सर्किट को वापस जाएंगे, सर्किट किधर है, इधर है, राइट। नाउ अभी वो प्रोग्राम जनरेट हो गए ना, वो प्रोग्राम इसमें माइक्रो कंट्रोलर में डालना, उसके लिए राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना, देन ब्राउज करो प्रोग्राम। किधर है मेरा प्रोग्राम, तो मेरा प्रोग्राम एफ ड्राइव में ऑनलाइन क्लासेस माइक्रो कंट्रोलर में ऑब्जेक्ट्स में स्विच एलईडी प्रोग्राम, राइट। ओके, ठीक है, प्रोग्राम कॉपी किया, अभी रन करो। अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ, इसलिए सभी एलईडी स्विच ऑफ है, सभी एलईडी ऑफ। और मैं स्विच प्रेस कर रहा है, एलईडी ऑन कर रहे हैं, स्विच रिलीज कर दिया, ऑफ हो गया। प्रेस एंड होल्ड, रिलीज करे तो ऑफ होएगा। ओके, कुछ डाउट्स है इसमें? कुछ डाउट्स है क्या? राइट, नाउ program, I'll explain the program. So here what we are doing now, we have connected one switch at P1.0. So we are going to read the status of P1.0 first. So based on the status, we will decide that whether these LEDs needs to be on or off. Okay. So इधर क्या कर रहे हैं हम, प्रोग्राम में क्या कौन सा लॉजिक होना चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर फर्स्ट ए पिन को रीड, स्विच का स्टेटस रीड करना, स्विच का स्टेटस रीड करना बोले तो क्या है, कौन सा पिन देखना, माइक्रो कंट्रोलर P1.0 को देखना, क्योंकि स्विच किधर कनेक्ट किया, P1.0 में कनेक्ट किया। ओके, सो स्विच के बारे में, स्विच का स्टेटस चाहिए तो माइक्रो कंट्रोलर किधर देखना, P1.0 में कौन सा वैल्यू है, 0 और 1 है, राइट। ओके, वो देखने के बाद फॉर एग्जाम्पल P1.0 में 0 है तो क्या है मीनिंग, स्विच प्रेस किया, स्विच प्रेस करे तो 0 आएगा। देखो इधर स्विच प्रेस करे तो इधर ब्लू कलर डॉट आ रहा है ना, ब्लू बोले तो 0, रेड बोले तो 1। ओके, सो 0 है तो मीनिंग क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या समझाना, माइक्रो कंट्रोलर ओके स्विच प्रेस किया, स्विच प्रेस करे तो क्या करना, सभी एलईडीज को ऑन करना। सभी एलईडीज को ऑन करने के लिए क्या करना, पोर्ट 2 है ना, सभी एलईडीज किधर कनेक्ट किया, पोर्ट 2 को कनेक्ट किया। अभी एक एलईडी को ऑन करने के लिए करस्पॉन्डिंग पिन क्या होना चाहिए, लॉजिक 1 होना चाहिए। सभी पोर्ट 2 में ये रीड करके स्विच ऑन है तो ये रीड करके P1.0 अभी सबको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। एक पेन लेके पेन में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो नाउ इधर क्या कर रहे हैं हम, सॉरी, माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो कंट्रोलर है, इधर हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है, इधर हमारा एलईडी था। ओके, तो इधर हमारा एलईडी ऐसा कनेक्ट हो गया। ओके, ऐसा कनेक्ट हो गया, तो 8 एलईडी कनेक्ट हो गया, राइट। ये इधर एक स्विच कनेक्ट हो गया, इसका नाम स्विच, ये 8 एलईडीज, राइट। तो अभी ये किधर कनेक्ट किया,
P1.0 में कनेक्ट किया। ये सभी कौन सा पोर्ट 2 में कनेक्ट किया, सभी पोर्ट 2 में कनेक्ट किया, सभी एलईडी पोर्ट 2 में कनेक्ट किया, राइट। तो इधर P1.0 में कनेक्ट किया। अभी माइक्रो कंट्रोलर क्या करना है, ये एलईडीज को ऑन करना और ऑफ करना डिसाइड करने के लिए स्विच का स्टेटस रीड करना। स्विच किधर कनेक्ट किया, स्विच ग्राउंड को कनेक्ट किया, राइट। स्विच ग्राउंड को कनेक्ट किया, इधर ग्राउंड है, राइट। ग्राउंड को कनेक्ट किया। सो अभी स्विच प्रेस करे तो इधर क्या है, मीनिंग क्या है, P1.0 में अभी आप स्विच प्रेस किया, स्विच इज ऑन बोले तो P1.0 का वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। स्विच ऑफ बोले तो P1.0 का वैल्यू विल बी 1। ओके, राइट। सो नाउ हियर हम स्विच ऑन है तो ये ऑन करना। तो हमारा प्रोग्राम में लॉजिक क्या है, फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर स्विच को रीड करना। ओके, स्विच को रीड करके ओके P1.0 वैल्यू 0 है तो क्या करना, एलईडी को ऑन करना, राइट। ओके, नहीं ये P1 ओके अभी नाउ P1.0 का वैल्यू 1 है बोले तो एलईडी को ऑफ करना, राइट। तो ये हमारा लॉजिक है। Okay, Suman is asking, sir, if you don't connect switch other end to ground, what happens? Okay, so what happens means either you have to connect it to ground or VCC, right? Otherwise, na, it is floating. Your switch is not connected. Your circuit is not complete. Your circuit is open. How the current will flow? It won't flow. Your hardware circuit, that basic electronic circuit condition क्या है, तो आप कौन सा सर्किट भी ले लो, सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए। ओके, सर्किट क्लोज नहीं हुआ तो क्या होता, आपका वैल्यू, सर्किट क्लोज नहीं हो तो करंट का वैल्यू 0 होता, आप देन वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। ओके, सर्किट काम नहीं करता, राइट। either you have to connect it to ground or VCC. Okay, right, fine. Now here what I'm going to do is, so this is the logic, this is my logic na. So now same way we are writing, so we are testing before taking the decision about LED to on or off. I'm testing the P1.0 value. If P1.0 value equal to 0, I will make LEDs on. If P1.0 value equal to 1, I will make LEDs off, right. Now so अभी इधर एलईडी ऑन करना और ऑफ करना डिसाइड करने के पहले क्या कर रहे हैं, मैं इधर P1.0 का वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं। इसका वैल्यू 0 है तो मैं ऑन कर रहे हैं, इसका वैल्यू 1 है तो मैं एलईडी को ऑफ कर रहे हैं, राइट। तो ये मेरा टास्क है, उसके लिए हम प्रोग्राम लिखना अभी। Okay, that Suman, I'll explain that also. Let me finish this. I'll explain that also. Okay, right. Now coming to the program. अभी प्रोग्राम मैं प्रोग्राम इधर नोटपैड में ओपन करता, थोड़ा बड़ा रहता आपको दिखने के लिए इजी। ओके, नाउ हियर प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट P2 को 0 कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट P2 को फर्स्ट 0 0 ले रहे हैं, 0 0 क्या कर रहे हैं, ए रजिस्टर को मूव कर रहे हैं, ए रजिस्टर से P2 को मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 0, क्यों 0 कर रहे हैं, क्यों 0 कर रहे हैं, एक्चुअली इधर माइक्रो कंट्रोलर, इधर देखो, अभी देखो, इधर आपका माइक्रो कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट सभी पिन से ना, अभी हम पोर्ट 2 यूज कर रहे हैं,
ऑलरेडी प्रोग्राम डंप किया है, उसीलिए ब्लू डॉट से इधर 0 है, राइट। बट सभी पिन, सभी इनपुट आउटपुट पिन क्या होता है, उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट लॉजिक 1 रहता। दैट मीन्स all the pins of ports, port 0, port 1, port 2, port 3. So all the pins will be by default it is ones. It is ones. Okay. By default its value is 1. Right. So now by default 1 है तो क्या होता है, अभी एलईडी कनेक्ट करे तो एलईडी तुरंत ऑन हो जाएगा। विदाउट प्रेसिंग द स्विच एलईडी ऑन होता ना, उसके लिए टू अवॉइड दैट ऑल द अननेसेसरी कंफ्यूजन मैं क्या कर रहे हैं, सभी 0 कर रहे हैं। आप कौन सा एप्लीकेशन भी ले लो, आप यूज करने के पहले प्रोग्रामेटिकली वो कौन सा पोर्ट यूज कर रहे हो, प्रोग्राम पोर्ट को 0 कर दो। ओके, कौन सा पोर्ट यूज कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन में, पोर्ट को वैल्यूज 0 करो। 0 करो तो क्या है, हम इधर प्रोग्राम में क्या दिया, 0 0 दिया, हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू 0 0 बोले तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट क्या है, 0 बोले तो 4 zeros बाइनरी, अगेन 0 बोले तो 4 zeros, राइट। सो दैट मीन्स पोर्ट 2 में सभी पिंस 8 पिंस का वैल्यू 8 zeros, ओके 8 zeros, 8 zeros। सो सभी एलईडी साफ होता, राइट। उसके लिए उधर वो स्टेटमेंट लिखा, राइट, तो ठीक है। नाउ हियर हम ऑलरेडी डिस्कस किया लॉजिक, क्या लॉजिक है, P1.0 को चेक करना और 0 आई तो एलईडी को ऑन करना, P1.0 1 आई तो एलईडी को ऑफ करना, राइट। कैसे चेक करना, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन था, हम इंस्ट्रक्शन सेट में डिस्कस किया, ओके। सो JB मींस जंप इफ बिट इज इक्वल टू 1, ओके। JB का मतलब क्या है, जंप इफ बिट, विच कौन सा बिट है, इधर कौन सा बिट मेंशन किया, ओ बिट। जंप इफ P1.0 इक्वल टू 1, राइट। जंप इफ P1.0 इक्वल टू 1, राइट। सर वर्डपैड स्क्रीन नॉट विजिबल, ओके आई विल शेयर दैट। अभी विजिबल है ना, राइट। सो नाउ हियर अभी JB 1.P1.0 नेक्स्ट लिख रहा है इधर, ओके ओके। सो JB P1.0 बोले तो जंप, JB का मतलब क्या है, जंप इफ स्पेसिफाइड बिट इज इक्वल टू 1, P1.0 वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हम जंप करना। सो नाउ P1.0 वैल्यू इक्वल टू 1 है तो क्या करना, हम क्या करना, if P1.0 value equal to 1 है तो LEDs को ऑफ करना, राइट। so same thing we are doing here programmatically, same thing we are doing here। so now yes, JB value 1 है तो किधर जंप होता, नेक्स्ट को जंप होता, नेक्स्ट किधर लिखा, इधर नेक्स्ट लिखा, ओके इधर नेक्स्ट लिखा। इधर क्या कर रहा है, 0 0 A को मूव कर रहे हैं और 0 0 P2 को मूव कर रहे हैं। 0 0 बोले तो सभी 8 बिट्स 0 है ना, 8 LEDs को 0 दे रहा है, सो LEDs ऑफ हो जाएगा। ये क्या करता, एलईडी ऑफ, ओके एलईडीज को ऑफ करता। ये दो स्टेटमेंट्स क्या करता, एलईडीज को ऑफ करता, ओके राइट। ओके P1.0 वैल्यू 1 है तो इधर जंप कर रहा है, नेक्स्ट को जंप कर रहा है, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, हम दो एलईडीज को ऑफ कर रहे हैं। ओके P1.0 वैल्यू 1 नहीं है तो क्या है, ये जंप नहीं करता, जंप नहीं करे तो क्या किधर आएगा, नेक्स्ट को है। ये जंप नहीं कर रहे हैं बोले तो मीनिंग क्या है, P1.0 वैल्यू 0 है, ओके P1.0, ओके you want in English also na, okay I'll explain in English also, don't worry। so first let me finish in Hindi, then after that I'll repeat the program in English also, right। okay अभी JB बोले तो JB कब जंप करता, P1.0 वैल्यू को 1 नहीं तो जंप करता, किधर जंप करता, नेक्स्ट को जंप करता, इधर जंप करता, ओके इधर हम क्या कर रहे हैं, सो 0 0 A को मूव कर रहे हैं, फिर A से P2 को मूव कर रहे हैं, सो P2 में सभी पिन
0 0 हो जाएगा, सो सभी एलईडी ऑफ हो जाएगा, राइट। तो अभी ये जंप नहीं कर रहे हैं, जंप नहीं कर रहे तो बोले तो मीनिंग क्या है, ए P1.0 का वैल्यू 0 नहीं है, 1 नहीं है, 0 है। 0 है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो जंप नहीं करता, तो जंप नहीं करे तो किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आए, माइक्रो कंट्रोल इधर आएगा, राइट। मीनिंग क्या है, P1.0 का वैल्यू 0 है, तो 1.0 वैल्यू 0 है तो क्या है, स्विच इज बीइंग प्रेस, स्विच प्रेस किया, ओके। अभी उस टाइम हम एलईडीज को ऑन करना, एलईडीज को ऑन करने के लिए एफएफ देना, एफएफ बोले तो क्या है, एफएफ बोले तो माइक्रो कंट्रोलर में एफएफ बोले तो एफ बोले तो 4 1s, अगेन एफ बोले तो 4 1s, दैट मींस अभी सभी पिंस को 1 दे रहा है, सभी एलईडीज को 1 दे रहा है, तो ये क्या करता, एलईडीज को ऑन करेगा, ओके। तभी नाउ इधर सभी एलईडीज को ऑन करेगा, ये दो स्टेटमेंट सभी एलईडीज को ऑन करेगा, ओके। ये होने के बाद किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर क्या कर रहे हैं, जंप L1, जेएमपी मींस जंप करता, किधर जंप करता, L1, इधर आएगा, इधर से एग्जीक्यूट होने के बाद एलईडीज को ऑन करके तुरंत इधर आएगा, तो जंप रिपीट बोले तो फिर चेक करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली चेक करना है ना, एक बार नहीं है, कंटिन्यूसली लूप रिपीट होना चाहिए, उसके लिए जंप रिपीट। सभी प्रोग्राम्स में हम ये दो स्टेटमेंट्स कॉमन है, ओके, राइट, क्लियर। नाउ I'll explain the program, same program in English, right? Now here, first I'm putting 0 0 in port 2, right? First I'm putting 0 0 in port 2. Why I'm putting port 0 0 in port 2 na? So by default in 8051 microcontroller, the pin value will be 1, right? So here also port 2 also by default it is 1. If it is 1, all the LEDs will be on, na? But I don't want to have that particular functionality. Now I want to turn on the LEDs only if I press this switch. Okay, without pressing the switch, without the knowledge of this switch, how these LEDs I can make on? So I cannot, right? So that's the reason. First I'm making all the pins to 0. That means if you are going to use any port in your application, it is better to make the port value 0 before you starting your coding, right? So that you will not have any confusion, otherwise you will have some confusion, right? So that's the reason I'm making here all zeros, okay. So I'm going to use port 2, so I'm making port 2 as 0, okay, fine. Now here what I should do, because here my logic is I have to test the P1.0. if the switch is pressed, the switch is on, P1.0 value will be 0, then I have to make all the LEDs on, right? If the switch is off, P1.0 value equal to 1 and the LED should be off, right? So now I'm testing whether the P1.0 value is 1 or not, right? 1 or not. How I'm testing? So by using, we have one instruction called JB instruction. Jump if bit. What this instruction will do is, if specified bit, here I'm specifying P1.0, if the specified bit is equal to 1, it will provide the jump. Where it will provide? Wherever you have written next in your program, so there it will provide the jump, okay. Assume the switch is off. Off means P1.0 value equal to 1. So then this condition is satisfied, it will provide the jump to next. Where is that next? Here. So if the switch is not pressed, what you have to do? You have to make all the LEDs off. So that's the reason I'm moving 0 0 to port 2 here, okay. So these two test statements will make LEDs off, okay. अभी jump नहीं किया, इधर jump नहीं हुआ, I mean here it has not jumped to next. That means what does it mean? So P1.0 value not equals to 1. Not equals to 1 means it is equal to 0. In digital either 0 or 1. If it is not equal to 1, it is equal to 0. If it is equal to 0, what does it mean? The switch is pressed. When the switch is pressed, what you have to do? You have to turn on all the LEDs. To turn on all the LEDs, you have to load FF into the port 2. Okay, FF means all 1. So all the 8 LEDs will receive logic 1, all the LEDs will on.
So these two statements will make your LED on. So after this, we are jumping to L1. Why we are jumping? If you don't jump here, na, again it will turn off your LEDs. So after this, if you don't jump to last, na, it will turn off your LEDs by using this statement. So I don't want to turn off. Whenever my switch is on, I want to keep my LEDs on. So that's the reason I'm directly jumping here. Of course, this is again to repeat the functionality. Okay, so this is your program. Sir, why switch is on by giving logic 0? Yes, I'll show you. Nikita is asking why switch is on. See here. Why I'm telling logic 0 means switch is on, because here first of all I have connected switch to ground, right? So if you turn on here, red dot is there now. See here, P1.0, red dot is there. Red means it is logic 1, blue means it is logic 0. Okay, so now I'm not pressing the switch. The switch is off, that is switch is open. That means what is the value on P1.0? It is red. Red means logic 1. If I press the switch, these two contacts gets closed, then this ground is connected to P1.0. Ground is connected to P1.0 means, that means 0 is connected to P1.0. Okay, see here. Now here P1.0 value becomes blue. Blue means logic 0. Okay. Here my intention is I want to detect whether the switch is pressed or not. Okay. If the switch is not pressed, that corresponding value will be 1. If the switch is pressed, the corresponding value will be 0. Okay. So if I'm getting 0, then that indicates my switch is being pressed. Then I have to turn on the LEDs. So if I'm not getting 0, if I'm getting 1, that indicates my switch is not pressed, it is open. When the switch is off, all the LEDs must be off. Hope it is clear, Nikita? Okay. Is there any other doubts from this program? Common cathode LED. No. This is not 7-segment display. In 7-segment display, we have the types common anode and common cathode. Okay. But okay, of course, you can make since in one way what you are telling is correct only, because all the cathodes are we have connected to ground na. So you can say we made a common cathode. Okay. So ash means that is data. Whenever you are giving data, you should mention the ash. If you don't mention the ash na, it will be microcontroller will treat that number as memory location address. Okay. That's the reason I'm giving ash. Make any difference? Yes. Okay. Now I think Suman has asked. Okay, everyone, if this is clear, na? For everyone, this is clear, right? Now Suman has asked doubt that, so sir, instead of ground, I want to connect it to VCC, right? The VCC. Yes, that also you can do that. Okay. So see, don't confuse. Now our application is over, right? For the Suman doubt, I'm going to demonstrate this, right? For Suman doubt, I'm going to demonstrate this. R1 to R8. R1 to R8, these resistors, why we are using these resistors now? If you don't connect this resistor, that means resistor we are connecting means we are including resistance in this particular path. Okay. So whenever the high currents comes from microcontroller, it will damage the LED. Of course, in simulation, we don't have any problem, but when you are connecting real LEDs hardware, so the LEDs may damage. Those are LEDs are sensitive components, right? If some extra current comes, it will damage the LED. So to avoid that damage, we are connecting one resistor, 330 ohm resistor. If any extra current comes also, this resistor will regulate that current. Okay. Right. Sir, pin number 20 and 40 is earth. Yes, 20 and 40 is earth. This is pin number here in this simulation. Na? In this simulation, that pin number 20 and 40 is not shown, because in the simulation that 20 is connected to ground already, 40 is connected to
VCC, right? 20 and 40, you cannot see 20 or 40 number here because those pins are hidden. Those pins are hidden and those are already connected to ground and VCC respectively. Okay, because in the simulation they will make for every application we have to connect ground, VCC, not only ground and VCC, we have to connect reset, we have to connect what is that clock, we have to connect EA bar to VCC, all these things we have to do, right? So this will take some time now. That's the reason in the Protis simulation they have provided that all those basic connections are default. They are made default, and still if you want to connect you can make it, no problem. Yes, resistor to protect the LED. All these resistors we have connected in series with the LEDs now, just to protect the LED. Right. Now I will make, now what I will do is I will since Suman has asked some doubt that instead of ground I will connect it to VCC. What happens? Okay. So now I'll remove the ground. I'll remove the ground. Now I will take VCC. Power I will take. VCC means power. Okay. Now you see here. What you have to do is, see here. When it is pressed, before pressing it is 1. When it is pressed also, it is 1. There is no difference, right? So now programmatically we have to change one thing, or here also we can make like this. Here sufficient voltage is not coming. So what I will do is, programmatically I will make it as 0. Okay. So in my program, what I will do is I'll clear P1.0 also. So you have to do adjustments accordingly. See here, remember, no need to worry about these things if you are not understanding, because this is my answer to the Suman question. Okay, ground we are getting, but here sufficient voltage we are not getting. See here red or blue only we have to get, right? Red and blue only we have to get. Here we are getting yellow. Yellow means the voltage is not sufficient. We will see what is the problem. So here you can insert voltage probe. Probe is there now. Probe you can take and you can insert here. It will read the voltage. When you are pressing, how much voltage you are getting? Yeah, it is. So that means you have to make some adjustment in the circuit. With VCC also we can do, but the thing is only you have to make adjustments accordingly. So now what I will do is I'll insert one resistor. First of all, I'll read the voltage here. I'll load voltage here. Here I'm getting 5 volts. Okay. Now similarly I will insert here. Okay. While running you cannot insert any, you cannot make changes in program. Now again I will run it. So you are getting yellow means that is in between 0 to 5 volts. Okay. So what I will do is, that means this is redesigning the circuit. That's all. Okay, I'll do pull up resistor. And pull up resistor I'll connect. Pull up. So for that you have to take one 10K resistor.
what you have to do is this 10K resistor you have to connect between VCC and this particular pin. Okay, now you can see here. So ground, when it is being pressed, it is red. Okay, so that means if you get any voltage problems now, you can see here now here it is 0.0 volts. It is blue, right? It is 1. Now if you see here, what is the change? When the switch is not pressed, what is the value on the P1.0? It is 0. Now in this case, if you connect the switch other end to VCC, what does it mean? When the switch is open, when the switch is off, the value will be 0. When the switch is on, the value will be 1. So accordingly, you have to change the program also. So in the program, what you have to do, only one change. Instead of JB, you make it as JNB. That's all. Right? So now I will run it. I'm executing the program, building the program. Okay. So in the program, what I am doing, the program instead of JB, I made it as JNB, and again I compile. I'll go back here, and I'll execute the program. Okay, I'll execute the program. I'll down the program, new program again. LED. Okay, fine. Now you see here, when the switch is not pressed, here blue is there, all the LEDs are. When the switch is pressed, all the LEDs will be on. Okay. Hope it is clear, Suman. Any doubt? Okay. Right. And Sunita is asking pull-up resistor. Why we have connected this resistor? See, before connecting this resistor, we had one problem that whenever you are pressing the switch, you are not getting 5 volts. You are getting blue, but you are not getting red. That means you are getting 0 volts, but you are not getting 5 volts, right? So that means you are getting voltage less than 5 volts, which is not recognized as, you are getting voltage, some voltage, which is not recognized as logic 1. For logic 0, you are getting sufficient voltage, blue, right? But for logic 1, you are not getting sufficient voltage. So in any case, in any application, if you are facing this type of problem, you take one 10K resistor, and connect it between VCC, one end of the 10K resistor, you connect it to VCC, and other end of the 10K resistor, you connect it to pin where you are having this voltage problem. Okay. So now by connecting this 10 volts, this 10K resistor, what it will do, you are facing some issue now when you are about to give logic 1, but you are not getting 5 volts. So you are getting shortage of 5 volts. That means 2 volts or 2.5 volts, something you are getting. So that won't be recognized as logic 1. So this resistor will use it to increase the voltage level on this pin when it is logic 1, right? So it is increasing voltage to 5 volts. So that means this resistor is pulling your resistor, this resistor is pulling your voltage on the corresponding pin to 5 volts now. So that's the reason this is called pull up resistor. Okay. And pull down means 0 volts, 5 volts, right? If you are connecting resistor to 5 volts to increase the voltage level on the pin to 5 volts, that is called pull up, right? If you want to make voltage level on this pin as 0, you have to pull down to the 0. That is called pull down resistor. That means if you connect this 10K resistor with VCC, that is called pull up resistor. If you connect this 10K resistor with ground, that is called pull down resistor. Okay. Clear, Sunita? How to download programs and convert X format? Yes, that's what we did now. For that, we have separate program. Sendil is asking
how to write the program and how to convert it into the machine coded file. So for that, this is the software Keel software, free cross compiler. So there you have to create the project and you have to write your program. You have to add your program to your project. Then go to flash menu, configure flash tools, output menu, create X file, you enable it, then compile it. Compiling means project build target. Okay. So if you build, the project will be compiled. If it is 0 errors, the project will be compiled, and means your program is compiled and machine code is generated. Machine code is generated where? Here, this is the location. F drive, online class information, microcontroller, switch, LED, object folder is there. In that, it will be generated. So all these things I have explained in the part 11, right? So I think maybe who is that? Sendil. Sendil, you might have missed part 11. You just see it is available in the Facebook Nimi channel. I mean Nimi account. You just watch that part 11. There you will get. There I have explained step-by-step procedure how to create the project in Keel cross compiler, how to execute it, how to generate the machine coded file. Everything I explained. Okay, sir. We'll wrap up. Just 2 minutes. Give me 2 minutes. Starting address, sir, in this program. So no need to worry. Yogesh is asking what is the starting address in this program. No need to worry about that. That everything this compiler will take care. So it will store in the memory. So wherever free memory locations are available, there our program will be saved. Okay, and if you want specifically, I want to store my program at so and so address only. So then what you have to do, programmatically you have to give origin from 1000 like that. Where you want to save that address you have to give. Okay, but that is not required. There is no much difference in that. Okay, org000h also you can give. Whatever the address you want, you can give. Okay, because here our interest is we have to concentrate on our application. We have to develop the application, right? Doesn't matter where our program is saving. That's the reason I'm not touching that. If I explain, if I combine that also, people will feel complex. Why you are writing 0? Why we have to save the program at so and so? By leaving the actual logic, people will worry more about that. Why we have to share at 000h only? Why not 1000? Why not 2000? They'll think. So that's the reason I don't want to put people in confusion. That's the reason I'm not using that. Okay. Thank you everyone. And tomorrow we will meet. Tomorrow we'll discuss about this switch. Now to switch LED we did now. So switch 7 segment display we'll see. And after that, Suman, I'll answer your question tomorrow, because when we are interfacing switch with 7 segment display, you can have multiple displays with a single port. That also I will show you. Tomorrow we'll connect multiple ports with a single switch, and we'll do that. Then after that, LCD interfacing we'll do that as per the IoT service. Right? Thank you everyone.